JAMES HANSE APHLC ASDC KSA Lapen APHLC Women Center Executive Committee Chingrum Si DIMA South District HAFLONG ASDC Office asaihem along PHERANGKE amei kepha bangso PHERANGKE amei kepha nang pokalam theja semet lake hemprek kehang kato kabe chingrum petpen kehang jia phansi DIMA South arata tuma phan kachuningri Lapen Article 244A prapjin pen kapachun jia phan jesong paknang jipusi pachin pon Bangso PHERANGKE amei kangi along DIMA South HAFLONG District Committee President Janata Kemprai Lapen HAFLONG District Committee General Secretary L. Sona Singson Lapen Ex-President Moya Singh Dologo Fu Atum Chetong Du Tangte PHERANGKE amei along kaning jalam pe RDC DIMA HASAO long live! Long live, long live! Darby long live! Long live, long live! Darby ang long is the DIMA HASAO long live! Long live, long live! Hempred long live! Hempred long live! No autonomous state! No autonomous state! Pardon, time stop. Thank you so much, my dear media personnel, and I would like to greet my esteemed colleagues coming from DIFO, Forum for Hills Autonomous State Movement. I am the joint convener, and Mr. Terong is also the joint convener, and we have a secretary, a joint secretary, Peter Tiso, and our vice president, Mr. Thengbeng Ingleng, and also we have a women committee, Rita Kramsapi. She is from APHLC, All Party Hills Leaders Conference, a president, Central Committee President, also a member, Lolita Kropi, and also our youth wing from ASDC, Mr. Lipson Crow and Mr. Bulson B. And also we have members from KSA. We are really extremely happy to be here this morning because we are organizing and we are trying to revive the movement for autonomous state, which is written in the Constitution, Article 244A of the Indian Constitution. That is a constitution for the creations of an autonomous state within the state of Assam, and that is for the two hill districts of Assam, Karbi Anglong and NC Hills. And now Karbi Anglong became two districts, East Karbi Anglong and West Karbi Anglong. And this constitution and this Article 244A is for the creations of an autonomous state for the Dimasas and for the Karbis and all the tribal communities living in these three districts. So today, the purpose of our coming to HAFLONG is to revive or to reform that movement with the people of NCLs. And today we are extremely happy to meet the ASDC, Autonomous State Demand Committee members from these districts. And there are other communities like Nepalese and then Biharis and other communities may be here. We are extremely happy to be with you today this afternoon. And our wishes is to revive and to give pressure to the central government. We'll give pressure to the state government that Article 244A should be implemented immediately. This is our demand and this is our wishes because our demand has been lasted now for 40 years because this movement started from 1986-87 and the first committee for this autonomous state movement was ASDC, Autonomous State Demand Committee, and the second committee was Karbi Anglong and NCS Autonomous State Demand Committee. These two committees were demanding for the last 40 years. Until today, we haven't received any response. We haven't received any reply from the central government that the autonomous state government will be given to us. There is no commitment. There is no any proposal from the central government. So what we want is that this constitution should be amended and this Article 244 should be immediately implemented because our people have been suffering for so many years because of this movement, because of this struggle, because of this mass movement, because of this people's struggle. People are suffering much and we are lagging behind in all fronts. Our people are lagging behind in all fronts because we are not getting this autonomous state.
Article 244A was not implemented, and because of that, we are lacking of everything now. We wanted to be like other people, like Nagas, like Mizos, like Khasis, like Garos, like other people in the northeastern states. They are having their own state. They are having their own, rights because of their statehood. They have got everything, but we are lacking everything because we are not having this autonomous state. We want to promote ourselves. We want to upgrade ourselves. We want to live like other people in India because we are so much of Indian. We are Indians. We love the Constitution. We love the Constitution made by Dr. Ambedkar, and that Constitution looking it for the minorities, especially for the tribal peoples, Adivasis people. So still today, we see that the Indian government is not taking care of our needs, not taking care of the minority people. That is very sad to say today. So today, the purpose of our coming here is to revive this movement again, and we want the people of NCLs to be with us, to work with us, to unite with us, to come together with us, so that we can go ahead with the movement, so that we can get this autonomous state immediately. That is the purpose of our coming to HAFLONG today. That is, thank you. DC committee office में SCC सेंट्रल कमिटी और डिमा हासाओ DC कमिटी की तरफ से और APHLC as well as फोरम फॉर ऑटोनॉमस मूवमेंट और प्रेस मीट के लिए आप लोग को बुलाया किया, क्योंकि आप लोग सभी मालूम है 240 और 4 आर्टिकल डिमांड के लिए कारीबांग और डिमा हासाओ DC के लिए जो मांग रहे हैं, और लास्ट 37-38 इयर्स में डेमोक्रेटिक मूवमेंट चल रहा है। और 1995 फर्स्ट अप्रैल में हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था उसका भी एमओयू हुआ, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया, और 244 आर्टिकल तो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इसके बारे में हम लोग का कारीबांग और डिमा हासाओ DC के लिए जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए जो ऑर्गेनाइज कर अभी चल रहा है, हासिल करने के लिए अभी हम लोग का फिर भी फोरम भी गठन किया था। APHLC, कार्बी स्टूडेंट एसोसिएशन, कार्बी न्यूट्रोची इंटरनेशनल, कार्बी ASDC यूथ फ्रंट और APHLC वुमेन कमिटी, वुमेन कार्बी स्टूडेंट एसोसिएशन लेके फोरम फॉर ऑटोनॉमस मूवमेंट हम लोग गठन किया था। इसीलिए हम लोग का दोनों डिस्ट्रिक्ट के लिए जो ऑटोनॉमस हम लोग मांग रहे हैं, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को प्रेशर देने के लिए हम लोग जो अभी ऑर्गेनाइज चल रहा है, इसी की तरफ से हम लोग का डिमा हासाओ का डिस्ट्रिक्ट ऑल सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी लोगों से हम लोग बातचीत करने के लिए, कमिटी गठन करने के लिए हम लोग आया है, और हम लोग का डिस्ट्रिक्ट कमिटी की तरफ से उन लोग का इनिशिएटिव करने के लिए उन लोग की बातचीत करने के लिए हम लोग कमिटी मीटिंग करने के लिए हम लोग यहाँ आया है। हम लोग बातचीत करेगा, हम लोग इसका बाद में हम क्या प्रोग्राम लेगा, कैसा करना और ऑर्गेनाइज करना होगा, इसी के बारे में हम लोग बातचीत कर लेगा। इसीलिए हम लोग जो डिमांड के लिए फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से और हम लोग का जो डिमांड हम लोग हासिल करने के लिए हम लोग ऑटोनॉमस मूवमेंट जो मूवमेंट ये प्रोग्राम लेगा, और इसी प्रोग्राम हम लोग सक्सेस करने के लिए और डिमा हासाओ और कारीबांग में भी जितना कम्युनिटी लोग है, जितना ट्राइब लोग भी है, हम लोग का लेजिटिमेट डिमांड जो है हासिल करने के लिए हम लोग मूवमेंट करने के लिए हम लोग उनका अपील करेगा। अपील कर रहा हूँ उसका सब लोग को भी हम लोग का सहयोग करने के लिए हम लोग उसके लिए अपील कर रहा हूँ। इसलिए हम लोग का मीडिया की तरफ से अपील किया है कि ऑल सेक्शन ऑफ द पीपुल ऑफ द बोथ द डिस्ट्रिक्ट आर रिक्वेस्टेड टू कोऑपरेट to join the
फोरम फॉर उत्तर स्टेट मूवमेंट जो फोरम किया गठन किया था उसका फोरम में करके लिए करके हम लोग का मूवमेंट स्ट्रॉन्ग करने का हासिल करने के लिए हम लोग का मूवमेंट और उत्तर स्टेट हम लोग हासिल करने के लिए हम लोग डिमांड करेगा और इसी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट लेने के लिए हम लोग हासिल लेने के लिए हम लोग कोशिश करेगा। इसके लिए हम लोग का तरफ से हम लोग अपील किया है, अब रिक्वेस्ट किया हम लोग का मीडिया की तरफ से भी हम लोग का इनका मीडिया की तरफ से भी हम लोग का आप लोग मीडिया की तरफ से भी हम लोग अपील किया है, जो का विशेष भी हम लोग का पीपुल्स का तरफ नीचे में जाने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करता हूँ। हम लोग का मीडिया की तरफ से इस लिए हम लोग का इसी प्रेस बीट के आप लोग बुलाया। थैंक यू। हम लोग का कन्वीनर भी है और एपीएससी कन्वीनर Yes, Bandi. Okay. ASDC. Present stage of the SDC. So present stage, you know, the both the district we have a central committee and a DC committee. There is a 6 district committees, and the committees are functioning now. And the different committee programs also we have taught, and all the programs we have successfully observed the programs. This is our stage, and the consensus committee and branch committee, even the board committee have also there. So what strategy will you take to strengthen your We have taken in the last conference also strategy, so that we can organize committees also in the up to the board committee level also. Organize a different section of different tribes of the people in the Goda district. In the now 3 districts, Karbianglong, West Karbianglong, and DIMA districts. अभी एक सवाल मेरा तरफ से है, ऑटोनोमस स्टेट का जो मूवमेंट था पहले, वो मूवमेंट आजकल नहीं दिख रहा है। पब्लिक का बीच में वो आपको नहीं ले जा पा रहे हैं, पब्लिक को समझा नहीं पा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, तो मूवमेंट नहीं दिख रहा है। अभी क्या ऐसा कोई वजह है कि इलेक्शन है इसलिए आप लोग आगे अपनी फिर से आपका जो कमिटी है उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं? इलेक्शन नहीं पर्पस है कि आप लोग या तो ऑटोनोमस स्टेट ही वाकई में मुद्दा है? इलेक्शन तो होते रहेगा, काउंसिल इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन, एमपी इलेक्शन, लेकिन हम लोग का प्रोग्राम तो चल रहा है ऐसा। अभी आप सिर्फ इलेक्शन के लिए हम लोग आया है ऐसा नहीं, हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग बातचीत करने के लिए we also attending our committee meetings also in the Karbianglong and different place of where we have organized the meetings. No, as I have stated, the autonomous state movement was started in the year 1986. Okay, and that is the beginning of the movement. Okay, and the SSC was a mass movement. They have people support, and they have about 90%. They have got a public support, and they have struggled for about 20 years. But in 1995, they could not go ahead with the movement. So they have got the agreement with the central government called MOU, Memorandum of Understanding. After that, the movement, they could not continue as they have agreed with the central government about the MOU. So the autonomous state movement, of course, they are demanding, but they could not demand as a whole as they have reached an agreement with the central government. So that is the problem. And after that, the armed struggle, they have also fighting for autonomous state through armed struggle. But they could not continue for long. So they have to stop on the way, on the halfway, and they have also an agreement with the central government, and they also cannot continue. And recently you have heard, and you are aware of the fact that 6 armed organizations, they also surrendered, they also have a ceasefire, and then they could not continue their struggle for autonomous state. And what we are doing now is, the autonomous state movement was at a halt, so to say, and it was full stop. Though they are saying that we are demanding for autonomous state, but practically they could not go for autonomous state. So what we are doing now is, all party Hill Leader Conference is, we want to revive this movement because we want the autonomous state. We don't want the package. We don't want the special packets or money or powers, this and that. We don't want that. What we want is what is written on the Constitution, Article 244A, which provide for the creation of autonomous state, and that is our goal. And anything shorter than that,
we, the APHLC, and also the Forum for Autonomous State, which is now consists of 8 or 9 committees. ASCC also there, KNC also there, Women, KC also there, and also APLC Women Committee also there, and also the SSC Youth Wing also there, and there are many committees. Now they are trying to join with us, and with all the parties, with all the communities, with all the organizations, with all the political parties, BJP, Congress, and then CPML and other communities, we want to bring together, stand together, and we want to fight together. And that is our objective, and that is the aim. So now what we are doing is we want to take up all those communities, Kokis, Paites, Dimasas, and then Khasis, and then Garos, Jaintias, all the people in Karbi Anglong, the 3 hill districts of Assam. We want to bring them together, and then we want to stand together, and we want to voice together, and we want to struggle together for autonomous state. And we are not fighting for political objective. We are not fighting for political benefits, but we are fighting for autonomous state. And that is our dedication, and that is our commitment, and that is our sacrifices. All of us here, now, we are for autonomous state. We are not for political adjustment. We are not for political interest, but we are for autonomous state, implementation of Article 244A, and that is our main demand. And we'll continue our fights till our goal is not achieved. एक ऑटोनोमस स्टेट का जो पहले जोश था पब्लिक के अंदर, कुछ भी बोलो तो पुलिस का लाठी खाने के लिए, आर्मी का मार खाने के लिए हमेशा आदमी लोग रेडी थे। वो जोश हम लोग देखा है। तो आपको क्या लगता है कि आप लोग फिर से वो जोश क्रिएट कर सकता है? Yes, surely, 100% we will do that. Yeah, we can do that. हेतो हम ही करे जाओ। हम लोग का जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जितना कमिटी का मेंबर्स है, we are committed to do that also. हम लोग जो मांग रहा है, हम लोग का दिन अच्छा हो और क्या बोलेगा खराब हो, हम लोग स्टैंड करेगा, हम लोग लड़ाई करेगा, ये है। नेक्स्ट इलेक्शन में आप लोग कैंडिडेट दे रहे हैं दिमाग से? अभी तक हम लोग का कोई डिसीजन नहीं है। हम लोग का कमिटी जो है नो डिसीजन सो फार, वो हम लोग का अभी साइलेंट है। हम लोग का ऑटोनोमस से जो मांग रहा है ये हम लोग ये लड़ाई कर रहे हैं। Pini nangli tum ladak haflong along kevang aputat etitin utan tum. Pinadak haflong long kevang penil tum justmet nitum link sami arong piglo la penil chiok par piglo ate pima ladak DIMA HASAO made HAFLONG along sedami aprang pen hemprek apan pete song do na korti atum ladak kemprai ake haido dak dolokofo ke haido dak mar ake haido la song sero ongdum haladak 1986-87 hut pen hemprek apan pete song do na korti tu pen chetong long pen pinat ko ini thura pen long la pen autonomous set ang tum daning hang pik la pen hang chi polang tum arta to pik lo 70 years 75 years arta saidi alang tum seta pinianian sta alang tum pulo nitum nang tum hembre ke hang longke nang chidon nonji lapenang hang dun veki pualang tum til tum mang ke thanu no pot nitum ningarong lo lapenil tum ke bang tala hello hembre ke hang asong hembre ke hang isia tim pusot pangtang tusi parjap tusi karbienglong and hills autonomous state kapelong vek tang ji punitum kamatha dampen nitum non muni chepang rumpen pindak haflong and skills long ta bang long pon dum ninga rong pen che hok lo la penang tum sami ni to man lam the lang pidun lo lam the nang che chak lo alang tum ta nang che song long nang che song dun pa me po pusi alang tum ta me lam the lang pidun lam chan nang pidun lo Pini ladak kumat mat si kachetong ladak district committee hin pen. ladak bang district committee ASDC atum si nang che tong lo dak haflong lo bakke la pen itu bang pen bang la ke Forum Hills Autonomous State Movement along kedo APHLC ASDC la persona si dagdolo KSA dolo la pen Youth Front dolo la pen to APHLC Women Central Executive Committee a president la pen member dolo la pen dak fini kebang maki maso ASDC district committee asaihem along di fupen itu central committee ASDC itu lapen ke PHLC to leader to colleague tu kai JAMES HANSE lapen ke tiso sang secretary lo pentum
dak district kupda bang kutum pen youth from pen KSL leader otitum pen dak bang lo kecil gaya kan pen ke dak di masa district kupdi SSI pen patin people si dak pen na bang ku senior leader sudah dapat tong dun pen itu ningarong piglo adu community pen man community pen di masa community pen no apa dak kuki community pen sami kapre community akhe pita pita chito pen ala tu non 75 years বা 65 years 70 years wa bang putu da hapran ka so du 86 67 pedang si som kan nota du tip hempek lo le pro so atap tip aso na ke kudul pe lasu si so ona lang wo alang le tum lam phe lam char pi du the pot suru par al tu patame la pe ni thelo le tu ka som ko lasu si pantang ko nunji la pe glem ko nunji la pe alang tu che chalo non tarik clearly di pulong rally ke dilo tami dang di bawah district ko tami pada ra dang ke tong ya kwana tu tami lam chak che chak lo tapi ni khelo itu ka che song lasu itu pangchang pun pusi chu ning lo nangli ke central committee along president niklo apat si nali labang so haflong long nangli tum ASDC members ko andolang nangli kachinia tengpen non ke aprang prang betu nang lem lo da district kubdi do ba constituency kubdi da do ya sitame ang bonglo mitu ka che song tami sab asong tami na tu kadu ka duri ba sab su ke do iglo puthua phi tami alom ti da bar tami ba rat tami la so ka che song no tami aning pe ka udila non jong sia kapre political development pen kapre ka ma thadu ko thai mini tami emple ka farmer SCC ka che song lo ba de rat ka che song lo kai itu ta dulu pula se alu pe tami la so lam lo pon sining thelo laya bang kubai tu pagung poluji pelai tu ka che song lo alok lam lo uthor bang su pening che tera chalo ha यस आज का दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ASDC HSLC और यूथ फ्रंट कार्बी आंगलोंग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है यहाँ कार्बी आंगलोंग में किसे यूनिट लेकर है ये हमारा डिमा हासाओ का जाति जनजाति दूसरे जो कम्युनिटी है डिमा हासाओ चार कोना का जो आदमी है वो कम्युनिटी ऑटोनोमस स्टेट ज्वाइंट ऑटोनोमस स्टेट के लिए सब पेपर रिमूव करने से मैं एसडीसी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने के नाते से मैं रिक्वेस्ट करता है फिर जितना यूथ फ्रंट है जितना है सीनियर है फिर हम लोग ऑटोनोमस स्टेट नहीं मिलने से कुछ नहीं होगा ये कार्बी आंगलोंग बोलिए डिपू और डिमा हासाओ हाफलोंग काउंसिल बोलिए यहाँ टेरिटोरी काउंसिल करेगा बोला असम गवर्नमेंट ये टेरिटोरी काउंसिल ने देख लिया कुछ नहीं इसलिए हम लोग की ऑटोनोमस स्टेट चाहिए ऑटोनोमस स्टेट में सब भी लड़ने से अच्छा होगा मैं फिर भी जितना नौजवान यूथ्स हाफलोंग यूथ्स का जो लीडर लोग फिर भी ज्वाइन करने से अच्छा होगा ऑटोनोमस स्टेट डिमांड पार्टी रीजनल पार्टी में इतना बोल के मैं मेरा वचन यहाँ खत्म करते हैं झूठ है खारडम Media reporters to mafkan chorolo pinilada Dima Hasao district along dak HAFLONG along nilitum wanglo ladake forum for Hills autonomous state movement itum ASDC tumpen wanglo lapen APSLC tumpen lapen ke ASDC youth front lapen ke lada APSLC women central executive committee nilitum akihai sir James Hanse president lapen akihai sir secretary lason taxi youth front tumpen Lipson crew lapen Gulsami lapen Chinghon ASDC a leader alangni akihai sar Sonasing Tera alangni tumpen chenglok nilitum ladap Dima Hasao arat atumaphat nang chitong lo ladap HAFLONG long nilitum ASDC office long nilitum ladap la forum for Hills autonomous state movement nilitum ladap ning aklong pen nilitum article 244A Puson sila district Kethom Karbi Anglong East West pen Dima Hasao itum ning isipit pen itum so article 244A autonomous state ha wana ning kan pen ni labang so autonomous state ki hang and PNR nila kado kawi party chipu pepin pen dorong
nang nila pun sodorong pun itu tot dependen itu ning isipet pen hachi song chip chip hansi itu la separation of state with article 3 and breakdown things tami itu gelong serak jia hansi itu kato kawis tami ning isipet pen ken kam che jorlo nang pusi nili central women executive committee president ahin tami Karbiang long is West Dima HASAO arado an konstami chisong rap petlo na lapen ititum akimangke ilitum lelitik tak ititum sangdet nang nepusi la kaddo kawe konstami isi birta alang kaddo kawe konstami chithan timung rablo ningarong pit pini alang ni sonson ladak maya sing dawlogupu alang ni ke ASDC ahud vice president ta non-president alang nito DIMA HASAO pen alang nito ne kachipaduk pinyanyan ta alang nito a leadership a stability hetik alang nito dotik alang nito han majok a spirit alang nito dotik mupen leaders to pen pachini konlo son taksi akhai sar suna sing tirang jinghon om alang li sitami karjap thip pen youth front ng sabi karjap to tipen pinyar ni an sitami labang so heart and soul alang nito uthot hempret ki hang rapet je phan masi leaders ki wang langmang arna ma herjume rada herjume pini ladak ka chingrum ke itum puthot kengkam ache jor thulo dasi asian countries a president ikip khan ikip putal henlo nang tum mithang adim damra nang tum haladak khodi isipet nang tum donon posi asian countries a president professor jian hongyu nang kipu aning alam pini ilitum puthot kengkam che jor thura pendona